Ayushman, you there? Yeah, we'll start once the timer ends. Till then, I'm sharing my screen. Yeah, Sure. I'll give a small voiceover. And you can see my PPT, right? Yeah, I can see it. Okay. So let me know when to start so we can begin then. Yeah. Sure. So, dear viewers, I'm getting a lot of chats that when the session is going to start. So, we are going to start the session in the next few minutes. So, please stay tuned with us. So, we are waiting for some more participants and we are going to start the session very soon. So, kindly be patient and we are going to start the session soon. So a very good evening to each and every one of you. Myself, Ayushman Datta from Motilal Oswal Financial Services. So a warm welcome and a very good evening. So today we are conducting a equity masterclass on asset allocation and its important in investing. So हमें पता है कि बहुत सारे clients है जो investor के mindset से आते हैं. So for them we have organized this special session, right? So our host for today is Mr. Nirav Vora. So Nirav Vora is having a rich experience in analysis. He is one of the senior fundamental analyst
from Motilal Oswal research team. So he will be taking you to the entire session, right? So stay tuned with us, and Nirav ji, you can start. Sure, sure. Uh, Thank you for that warm introduction. Good evening, everyone. I am Nirav Vora from Motilal Oswal research team. So I belong to the fundamental side of the equity research team. And today I would be talking about asset allocation and its importance in investing. So before getting into the presentation, again, I would like to thank each one of you for taking out the time on a Saturday evening and listening to this presentation of mine. It would be a 35 to 45 minute kind of a presentation wherein I would be covering all the aspects as far as the asset allocation, why it is important, and how do you make a portfolio. So I would be taking around 35 to 40 minutes, and then probably I would like to answer all the questions whatever you have. Please feel free to ask all the questions, and I would be happy to answer all of them. So I'll start my presentation. I hope my slides are visible. Yes, it is visible. And Nirav ji, as majority of our participants wants Hindi and English, you can mix both the language. Sure, sure, sure. I'll use both the languages. So I would be talking about asset allocation and its importance in the investing. So when we talk about equity as an asset class, it becomes very, very important to understand why do you want to invest, how do you have to invest, whether we have sufficient knowledge, all the requirements are there. अगर मैं एक particular portfolio बनाना चाहता हूँ तो क्या मेरे पास वो knowledge है नहीं है, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो वी हैव टू टेक केयर इन माइंड, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. So getting into the presentation, this would be the flow of my presentation. I would be talking about goal setting. Why do you need to build a long term investment portfolio? क्यों बनाना जरूरी है एक investment portfolio? When we talk about investment portfolio, obviously asset allocation is the most important thing which comes into our mind. So how do you build a long term investment portfolio? Asset allocation आप कैसे करोगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे. What are the different types of investment portfolios? Okay. उसके बाद since we belong to equity research and we typically cater to direct equity portfolios, I would be taking you through in depth as far as the direct equity portfolios are concerned. What are the different types of direct equity portfolios? How do you understand the sectoral diversification in equity portfolios? क्यों जरूरी है sectoral diversification? And then we will be talking a little about which are the preferred stocks and sectors in the current realm of things, and how do you build a model portfolio in the current market scenario. उसके बाद हम लोग ये थोड़ा नजर डालेंगे कि how do we monitor and evaluate our portfolios which we have built over a period of time periodically. मतलब क्या करना चाहिए, portfolio तो बना दिया, उसके बाद जो हमारे goals हैं, whether we are able to achieve them over a period of time, or we need to take some steps to rectify if we are not able to achieve the goals. So then obviously conclusion mein we would be having the Q&A, wherein I will be happy to answer all the questions. So I will take another 35 to 45 minutes and we will go through this presentation. So before getting into this particular presentation, one question I will ask all of you is whether investment is an art or science. This is the most important question which we need to ask ourselves, कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, ये एक आर्ट है या एक साइंस है. तो friends, it will be a very interesting presentation, and at the end of the presentation you will get to know the answer of this particular question. So kindly be with me for next 35 to 40 minutes and you will definitely get the answer whether investment is an art or science. So let's get into the first part of the presentation, that is the goal setting, which is very, very, very important. When we talk about investments, सबसे पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है. What are the things which I want to do in near future, or maybe over a medium term period, or maybe over a long term period. So सबसे पहले ये सारी चीजें you have to note down कि मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है and what is my purpose of investing. So many people want to buy a house, okay,
many people want to buy a car, many people want to sponsor their children's education, many people are working. So maybe 10 years down the line or maybe 15 years down the line, you have a plan, you have a set goal कि बॉस आई वांट टू सेंड माय चाइल्ड अब्रॉड. तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा सा कॉर्पस आज से जमा करके रखना है ताकि 15 इयर्स के बाद मैं उसका एजुकेशन इजीली स्पॉन्सर कर सकूं. Or maybe I am a travel freak, or I want to every year want to see the world, I want to do foreign trips. तो उसके वजह से मुझे शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत पड़ेगी. तो आप उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान आउट करिए. Yes, very important thing is retirement planning. I mean, people have to think about their retirement planning because uh, in this particular world which is absolutely uncertain. 2 साल पहले ये पैंडेमिक शुरू हुआ पूरे विश्व में, किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड many people's lives have gone upside down in last 2 years. बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं किसी को भी पता नहीं चला कि क्या होने वाला है अगले 2 साल में या अगले 5 साल में. तो उसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग. आई मीन व्हेनेवर यू आर अर्निंग, एट द सेम टाइम व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस मैं कौन से प्रोडक्ट में डालूंगा, कितने टाइम फ्रेम के लिए डालूंगा और उस पर टैक्स का इम्प्लीकेशन कैसा होगा. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है. Typically these are the goals which you have to jot down and then eventually get into your investments. So asset allocation, how to build a long term investment portfolio. So सबसे पहले there are different types of asset classes. So if you look at this particular slide, there are different types of asset classes like fixed deposits, government securities होते हैं, which are typically the RBI bonds, या फिर बहुत सारे other government securities होते हैं, mutual funds, gold and real estate. Obviously these are the different types of asset classes wherein people want to invest over a period of time and for maybe short term, medium term or long term period. And obviously there is this direct equity, that is this stock market, जहाँ पे आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो. सो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो पीएमएस होता है, आजकल बड़े बड़े पोर्टफोलियोज भी फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, विच आर कॉल्ड एज एआईएफ, जिसमें 1 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट होता है. पीएमएस में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है. म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन पुट 5,000 ऑल्सो, यू कैन पुट 50 lakhs ऑल्सो एंड यू कैन पुट 5 crores ऑल्सो. एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट इक्विटी में भी यू कैन पुट whatever amount you want to put. So indirectly all these asset classes, matlab mutual funds, PMS, direct equity, AIFs, they typically cater to your equity segment. Okay, that is one asset class. Then you have debt as an asset class which consists of government securities, bonds, fixed deposits भी आप उसमें consider कर सकते हो. उसके बाद गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है इंडिया में. मैक्सिमम हाउस होल्ड के पास इंडिया में गोल्ड होता ही होता है, आइदर इन फिजिकल फॉर्मेट या तो फिर आजकल तो ईटीएफ भी आ चुके हैं, तो ईटीएफ में भी लोग लेना पसंद करते हैं आजकल. एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट अगेन इट इज एन एसेट क्लास जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे भी पैसा बनाते हैं. So when you are investing in these different asset classes, there are typically very important factors which you have to keep in mind when you are deciding your asset allocation. So the first one is the time frame for which you are investing into the particular investment. Okay, कितने टाइम के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. उसके बाद में व्हाट इज द रिस्क एपेटाइट. मैं इन्वेस्ट तो कर लूंगा, अब अगर मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो शायद मैं एफडीज में इन्वेस्ट करूंगा. अगर मुझे रिटर्न्स देखने हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं शायद इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा. अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं शायद इक्विटी में करूंगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करूंगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. तो कोई फंड मैनेजर होगा तो बेटर मेरे पैसों को हैंडल करेगा. एंड ऑब्वियसली आई हैव टू सी टू इट दैट मेरा पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. बिकॉज अगर आप सिर्फ इक्विटी में डालोगे and if you want to make money only from equity and आपका risk appetite उतना नहीं है,
And let's say for example something like 9/11 happens, or something like 2008 में जो financial crisis हुए थे, and then in 2020 when the pandemic came, the markets in these years had gone down by 40 to 60%. So अगर मेरा risk appetite नहीं है और अगर मैं डर जाऊंगा, तो शायद equity as an asset class is not good for me. Then probably I'll have to consider government securities, bonds, fixed deposits, जहाँ पे मेरा पैसा एकदम safe और secure होता है. तो सबसे पहले आप जब भी आपका पैसा निवेश करते हो, that is इन्वेस्ट करते हो, you have to understand कि बॉस मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है एंड मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है. अगर मैं ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हूँ, then yes, definitely you can go ahead and invest into equity market also through various channels, that is mutual funds or PMS or direct equity. उसके बाद जब भी आप एसेट एलोकेशन करते हो, तो हम जैसे मैंने बताया कि देयर आर 4 पैरामीटर्स. सो लेट्स सी ईच एंड एवरी पैरामीटर इन डेप्थ नाउ. सो सबसे पहला है कि आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए. सो डू आई रियली वांट टू मेक मनी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. मेरा कैश फ्लो क्या होगा, क्या मुझे एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम कैश की जरूरत पड़ेगी. डू आई नीड लमसम अमाउंट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम टू मीट अ स्पेसिफिक नीड, or do I want to build asset for future. So depending upon all these questions, you have to first understand ki boss, what is my time frame for which I am going to invest into the markets. उसके बाद रिस्क एपिटाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज हाउ मच रिस्क आई एम विलिंग टू टेक. अगर मेरे में सहन शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है, रिस्क लेने की काबिलियत नहीं है, तो मुझे ज्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं डालने चाहिए. दैट इज द थंब रूल विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. Whether I am willing to accept the fluctuations in the investment value or even the short-term losses in order to achieve the long-term potential gains. So this is very important, guys. क्या होता है कि जैसे let's say हम लोग ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया एंड पेंडेमिक शुरू हो गया. अब मैंने इन्वेस्ट किया जनवरी में 2020 में, एंड फरवरी मार्च में मार्केट 40% नीचे चली गई. तो उसमें मेरा पूरा पोर्टफोलियो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख निवेश किया और मेरा पोर्टफोलियो 40% नीचे चला गया, जिसका मतलब है कि मेरा 4 लाख का मार्क टू मार्केट लॉस हो गया. तो अब आपका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है, और अगर आपने 6 महीनों के लिए निवेश किया है, एंड लेट्स अज्यूम कि मार्केट 6 महीनों के अंदर 10 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू पे नहीं आती है, तो देयर विल बी अ नोशनल लॉस ऑफ लेट्स से 2 लाख 3 लाख व्हाटएवर जो भी मार्केट का लेवल होगा तभी, एंड यू विल बी मेकिंग अ लॉस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा. एट द सेम टाइम वो 6 महीनों के लिए अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया होता, तो शायद आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होता. सो आपको सबसे पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, और अगर ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, जैसे 40% नीचे गया एंड देन 6 महीनों में अगेन मार्केट came back to its original level, and in last 1 year we have seen 100% returns on Nifty. तो अगर आप वो पर्टिकुलर वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हो, अगर आप वो शॉर्ट टर्म लॉसेस को बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर आप इक्विटी में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो. बिकॉज इक्विटी में कैसा होता है कि शॉर्ट टर्म पेन होता है बट लॉन्ग टर्म गेन होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिस्क एपिटाइट ऑफ योरसेल्फ. एंड अगेन रिस्क ऑब्जेक्टिव, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों इन्वेस्ट करना है आपको. जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में बताया, किसी को घर लेना है, किसी को कुछ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बस अगर मेरे को घर लेना है, तो मेरा लेट्स से नेक्स्ट 10 साल में मेरा सालाना 15% रिटर्न छूटने चाहिए. या अगर मेरे को घर नहीं लेना है और मेरे शॉर्ट टर्म नीड्स है, and if I'm really don't want to look out for 15% kind of a return, I am satisfied with 8-10% kind of a return, then probably you can invest into less riskier asset classes. So return objective आपको मन में बना लेना चाहिए, that is very very important. And then obviously diversification is very important. Let's say अगर आपने किसी riskier asset class में 20-30% डाल दिया, FDs में आपने थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लिया, गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर लिया, तो इट विल बी अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. सो अगर मार्केट क्रैश होता है, तो आपका सिर्फ 30% जो आपने इक्विटी में डाला है, दैट विल बी एट रिस्क एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज आपका दूसरा पोर्शन गोल्ड में है, दूसरा पोर्शन आपका एफडीज में है. सो इट्स अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. आपको रात को नींद भी अच्छे से आएगी. So these are the very basic parameters which you have to understand and you have to decide before getting into the investments.
Okay, now let's get into the direct equity portfolios, जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है. हम ज्यादा इक्विटी पे ही बात करेंगे और इक्विटी पे ही फोकस करेंगे बिकॉज दैट इज अ फ्लेवर राइट नाउ एंड वी टिपिकली cater to the equity research desk. So when we talk about the equity portfolios, there are basically three types of portfolios. एक होता है aggressive portfolio, दूसरा होता है बैलेंस पोर्टफोलियो एंड तीसरा होता है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो. अब अग्रेसिव पोर्टफोलियो क्या होता है कि यहाँ पे आप 80% इक्विटी में डाल रहे हो एंड 20% डेट में डाल रहे हो. ओके, डेट कुछ भी हो सकता है, जैसे एफडीज हो गए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए. सो 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इनटू डेट एंड 80% इज इन इक्विटी. अब इक्विटी में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे let's say 20% goes into direct equity, 20% goes into mutual funds, 20% goes into PMS, and 20% goes into AIF, or any combination is possible. So mota moti aapka 80% larger chunk of your money gets into equity. So aggressive zyada hai because risk associated with this portfolio is also higher. अब बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो. ओके, एंड वहां पे 60% आप इक्विटी में निवेश करते हो एंड 40% यू गेट इनटू डेट. सो इट्स अ बैलेंस पोर्टफोलियो. तो अगर मार्केट में वाइल्ड स्विंग्स आएंगी या फिर मार्केट कोलैप्स हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो आपका सिर्फ 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज एट रिस्क, 40% इज सेफ इनटू डेट. एट द सेम टाइम देयर इज थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो. मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ and I don't have much needs. And typically जो senior citizens होते हैं जिन्होंने अपने करियर का पूरा पैसा बना लिया है and now they want to safeguard their money, they want to pass on that wealth which they have generated to their next generation, अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं. तो उन लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना पसंद करते. तो for them conservative portfolio is much important because it only has 40% into equity and 60% into debt. अब ये कंजर्वेटिव का जो इक्वेशन है दैट इज 40-60, ये डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल दैट कैन चेंज टू 40-80 आल्सो, मतलब 40% into equity and 80% into debt. So that again depends from individual to individual. So अब हम डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियोज अगर देखेंगे तो डायरेक्ट इक्विटी में भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज हो गए, मीडियम टर्म हो गए एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज हो गए. तो अभी शॉर्ट टर्म यानी टिपिकली क्या होता है कि ये जो पोर्टफोलियोज होते हैं दे आर डिजाइन फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ सेवरल डेज टू सेवरल मंथ्स. सो लेट्स से फॉर 6 days 7 days से लेके 6 months के लिए मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया. एंड यहाँ पे मैं ज्यादा करके एक्टिविटी बहुत फास्ट रखूंगा, मतलब जो मेरा चर्निंग होगा लेना और बेचना वो बहुत ज्यादा होगा, so that I can make quick money. Obviously risk which is associated with this kind of portfolio is also at the higher side because you are taking a high churn, you are doing a lot of trades in your portfolio, obviously because you want to take the advantage of the volatile markets जो हम लास्ट 2-3 महीनों से देख रहे हैं. लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं, लॉन्ग भी कर रहे हैं एंड बहुत वोलेटिलिटी है. तो इस काइंड ऑफ मार्केट में हाई रिस्क हो जाता है आपके पोर्टफोलियो के साथ. सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ सेफगार्डिंग योर डाउनसाइड आल्सो. सो फॉर दैट यू हैव टू हैव प्रॉपर स्टॉप लॉसेस. ऐसा ना हो जाए कि मैंने 10 लाख शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया और मार्केट वन साइड नीचे जा रहा है, अगेंस्ट मेरे बेट के अगेंस्ट जा रहा है एंड 10 लाख का 5 लाख हो गया. So obviously you will end up losing your hard-earned money and you will make losses. So you have to keep strict stop losses in case of short-term portfolios. When we talk about the medium-term portfolios, these are typically designed for a time frame of 6 months to 1 year time frame. So risk which is associated is slightly moderate. क्यों? Because let's say for example last 2-3 महीनों में मैंने कोई एक पोजीशन खड़ी की है, at this point in time वो पोजीशन मेरे फेवर में नहीं है and I am losing 10% on that particular position. But मेरा जो time frame है that is 1 year. So I will hold on to that loss, that is the notional loss, mark to market जो loss मुझे अभी फिलहाल लग रहा है, and I will look at the markets 2 महीने 3 महीने 6 महीने में. तो जैसे ये ग्लोबल इवेंट्स या फिर डोमेस्टिक इवेंट्स पैन आउट हो जाते हैं
मार्केट भी थोड़ा शांत हो जाता है, एंड जैसे ही FIIs वापस इंडियन मार्केट में आ जाते हैं तो शायद 6 महीनों 8 महीनों के बाद मेरा भाव वापस आ जाएगा, एंड अगर लक अच्छा होगा तो शायद आई विल बी इन पॉजिटिव, शायद 10 15 20% भी मेरा एक साल में छूट जाए. सो टिपिकली दीज आर दी पोजिशनल ट्रेड्स विच वी डिजाइन इन सच अ वे कि हमारा टाइम फ्रेम 6 months to 12 months का होता है. सो अकॉर्डिंगली वी सिलेक्ट स्टॉक्स फ्रॉम दो सेक्टर्स जो हमें लगता है कि एक साल के अंदर या 8 महीनों के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा. तो यू हैव टू कैटेगराइज इन सच अ वे कि यू आर नॉट वेरी शॉर्ट टर्म ऑन योर अप्रोच, एंड थोड़ा मीडियम टर्म भी अप्रोच आप रख सकते हो. एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज होते हैं जहां पे योर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम इज मोर देन 1 year. So it can be either 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, or maybe 10 years, which is a very long term period. So अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो जिन्होंने लास्ट 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है, आज उनके बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज बन चुके हैं. आई मीन दे हैव क्रिएटेड मैसिव वेल्थ. सो द क्रक्स इज जितना लंबा टाइम होगा आपका इन्वेस्टमेंट का, उतना ज्यादा पैसा बनेगा. Obviously, because you are not taking the volatile markets into play. You are just keeping away from the shorter time frames जहाँ पे bad news आते हैं, खराब news आते हैं, and you are just passing on to that particular period, and you are just staying calm, peaceful for a longer term period. In fact, whenever the markets collapse, आप और एडिशनल फंड्स लगा के उसमें एवरेज आउट कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो. SIP के जरिए आप हर महीने निवेश कर सकते हो ताकि आप ये वोलेटाइल मार्केट का यूज कर सके, एंड यू कीप ऑन एडिंग टू योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे रिस्क जो होता है पोर्टफोलियो के साथ, दैट इज वेरी लेस, इट इज लो, बिकॉज आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाता है. एंड जैसे मैंने बोला, SIP इज द बेस्ट टूल टू टेक द एडवांटेज, एंड टू लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज बनाने के लिए SIP इज द बेस्ट टूल. इनफैक्ट अगर आप इक्विटी मार्केट्स देखोगे लास्ट 2 से 3 साल में हमारे इंडिया में करीबन 5 से 6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं. सो वी कैन क्लियरली सी दैट जो यंग क्राउड है, जो मिलेनियल क्राउड है, टिपिकली जो 20 साल से लेके 30 साल का जो क्राउड है, वो मार्केट में आया है फॉर द फर्स्ट टाइम. So for them, I would definitely suggest that please have your long-term approach as far as the investment bets are concerned. Definitely, a portion of your portfolio can be short-term and medium-term. आप पोजिशनल ट्रेड्स कर सकते हो, उसमें भी अच्छा पैसा बना सकते हो, बट आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा बनेगा. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक राकेश झुनझुनवाला, रामदेव सर, रामदेव अग्रवाल of Motilal Oswal, and many others who have made their money over a longer period of time. So that's why we recommend to have long-term equity portfolios. Okay, now जब हम लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो उसमें भी हम और ज्यादा तरीके से उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप. जैसे लार्ज कैप इक्विटी पोर्टफोलियोज जो होते हैं, उसमें जो स्टॉक्स होते हैं, दे हैव टिपिकली द स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप इज मोर देन 35,000 करोड़ का. Okay, so such portfolios will have bigger companies which have evolved over a period of time and which are robust in nature and usually very strong balance sheets. तो जैसे Reliance Industries हो गया, TCS, Infosys, so इनका market cap is more than 35,000 crores. They have been into the existence for a longer period of time. So they have seen bad times, they have seen good times, and they have evolved over a period of time. So obviously balance sheets उन्होंने बहुत strong बनाई है over last 5, 10, 15, 20 years. एंड धीरे 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 करके उनका जो इन्वेस्टर बेस है वो बड़ा है, एंड बैलेंस शीट भी काफी बड़ी है. सो द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज इज लिटिल लेसर. उसके बाद आता है मिड कैप इक्विटी पोर्टफोलियो, जहाँ पे जो कंपनीज की साइज होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10,000 crore to 35,000 crores. So obviously ये छोटी कंपनियां हैं as compared to the bigger companies which I mentioned. So something like let's say Pfizer हो गया या फिर Chola Finance हो गया, which have typically the market cap in the range of between 10,000 to 35,000 crores. So ये कंपनीज छोटी हैं, इनकी बैलेंस शीट की साइज छोटी है. They are new companies which have come into existence, let's say for last 5, 10, 15 years, and they have the potential to become bigger over a period of time.
जैसे रिलायंस एक टाइम पे एक मिड कैप कंपनी होगी, टीसीएस एक मिड कैप कंपनी होगी, बट धीरे धीरे करके साइज बढ़ती गई एंड इट बिकम अ लार्ज कैप कंपनी. सो जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है, एंड अगर आप अच्छे से रिसर्च करके अगर आप निकालते हो अच्छी अच्छी कंपनियां जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जो आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनेगी, तो यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू आइडेंटिफाई सच कंपनीज एट एन अर्ली स्टेज. सो जैसे 25,000 करोड़ की कंपनी आगे चल के अगर 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती है, क्लासिक एग्जाम्पल इज बजाज फाइनेंस. 10 साल पहले ये एक 25,000 करोड़ की कंपनी थी, जो आज 3 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी बन चुकी है. तो अगर आप आपने ये अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया होता, तो आपने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया होता. सो ऑब्वियसली 10 साल पहले रिस्क थोड़ा उसमें ज्यादा होता, बट अगर कंपनी अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छी है, एंड ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो बहुत ज्यादा पैसा लोगों का बन सकता है इसमें. सिमिलरली एक स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो होता है जहां पे 10,000 करोड़ मार्केट कैप से छोटी कंपनियां होती हैं. सो दीज आर टिपिकली 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 वाली 1,000 करोड़ वाली कंपनियां होती हैं, जो बहुत ही छोटी हैं एग्जिस्टेंस में, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दीज कंपनीज आर आल्सो ऑन द हायर साइड. डेफिनेटली अच्छी कंपनियां बड़ी बनेंगी, मिड साइज बनेंगी, एंड इवेंचुअली लार्ज कैप बनेंगी, बट यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज कोई कोई कंपनियां बर्स्ट भी हो जाएंगी. जैसे क्लासिक एग्जांपल इज सुजलॉन, एक टाइम पे मिड कैप कंपनी थी, रादर एक लार्ज कैप कंपनी थी. उसके बाद कंपनीज में बहुत सारे इश्यूज हुए. यूनिटेक एक अच्छा एग्जांपल है, पुंजलॉइड एक अच्छा एग्जांपल है, जो जिनका मार्केट कैप नीचे ही चला गया है बिकॉज ऑफ दी market conditions and the other reasons. So you have to be very very careful as far as you are investing into these small cap companies because risk associated ज्यादा है. उन्होंने ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं देखा है मार्केट में, कंपटीशन में भी ज्यादा हो सकता है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम. सो you have to be very selective when you are investing into these small cap companies. And then there is a multi-cap portfolio jahan pe you can have a combination of large, mid and small cap companies in whatever proportion you want to have. If you are an aggressive investor, then probably you can have more into mid and small cap companies and less into large cap companies. And if you are a conservative or a balanced guy, then probably you can have 50-50 into both, or you can have if you're a conservative, then you can have 80% into large cap, maybe 10% into 10-15% into mid cap, and 5% into small cap. So again, when you are building equity portfolios, sectoral diversification is very very important, जो मैंने आपको initial slides में भी बताया था. तो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है एंड उसमें सिर्फ 5 स्टॉक्स है. ओके, उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक आ गया, इन्फोसिस आ गया, कोई एक छोटी कंपनी समझ लो फाइजर जैसा कंपनी आ गया फ्रॉम द फार्मा पैक, एंड दूसरे 2 कंपनीज है. अगर आपका सेक्टोरल एलोकेशन बहुत ही स्क्यूड है, मतलब सिर्फ 2 से 3 सेक्टर्स आपने इक्विटी पोर्टफोलियो में बनाए, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अंडर परफॉर्म करेगा. इसका रीजन यही है कि जैसे फाइजर लास्ट 2 साल में बहुत कम चला है, एचडीएफसी बैंक लास्ट 2 साल में बहुत कम चला है, तो क्या होगा कि मार्केट 100% चला जाएगा बट आपका पोर्टफोलियो शायद सिर्फ 20% रिटर्न्स देगा. तो आपको लगेगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू दी मार्केट. So that is the reason why you have to have at least 15 to 20 good quality names in your portfolio when you are building a portfolio size of 1 CR. Again, if the portfolio size increases, then probably you can increase the number of stocks, but not very much on the higher side, because over diversification is also very bad. So you have to have a good diversified portfolio within various sectors. अब जैसे बैंकिंग नहीं चला है लास्ट 6 महीनों में, बट आईटी चल गया है, स्पेशलिटी केमिकल्स चल गया है, तो यू कैन हैव एवरी पोर्शन. रिटेल चल गया है, एनबीएफसी थोड़े बहुत चले हैं, आपका डिफेंस चला है, पीएसयू सेगमेंट अच्छा खासा चल गया है. सो कहने का मतलब यही है कि अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो एट द सेम टाइम दूसरा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा. सो यू शुड हैव अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. And as I told you, you should have 15 to 20 names in the portfolio, a well diversified portfolio. So मैंने यहाँ पे 2 सैंपल्स लिए हैं. ये एक पोर्टफोलियो का सैंपल है
जो हमने देखा था ड्यूरिंग मार्च ऑफ 2020, जब मार्केट जोर से गिरा था, ऑलमोस्ट 40% निफ्टी हैड गॉन डाउन, ओके, इन दैट पर्टिकुलर फॉल 2 महीनों में, फ्रॉम 12,400 लेवल्स निफ्टी हैड गॉन डाउन टू 7,500 लेवल्स. अब ये वाला जो पोर्टफोलियो है, इस इसमें हमने देखा था कि ये पोर्टफोलियो हैड गॉन डाउन बाय 57%. ओके, व्हेन निफ्टी हैड गॉन डाउन बाय 40%, दिस पोर्टफोलियो हैड गॉन डाउन बाय 57%. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स इज रफली 40-45. और एक दूसरा सैंपल हम लोग ने देखा था जहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स वर रफली 30-35, but the portfolio had gone down by only 16%. When Nifty had gone down by 40%, this portfolio had gone down only by 16%. अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था. So what are the key takeaways as far as these two portfolios are concerned? अब जो first portfolio था, जो almost 60% नीचे था, it was a mid cap portfolio. It was only concentrating in the mid cap segment. The number of stocks were 35 to 40, which is on the higher side, and there was no proper sectoral allocation. ओके, सेक्टर्स में कुछ अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ था. तो रिजल्ट यही था कि पोर्टफोलियो वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 57-60% एंड इट अंडर परफॉर्म द मिड कैप इंडेक्स आल्सो एंड द ब्रॉडर इंडेक्स आल्सो. अब जो सेकंड पोर्टफोलियो था, इट वाज अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो. अब यहाँ पे द पोर्टफोलियो वाज नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मिड कैप्स, बट देयर वाज लार्ज कैप, स्मॉल कैप एज वेल एज मिड कैप्स. Number of stocks were 35 to 40, again, which is on the higher side, but because it was a multi-cap, the damage on the portfolio was much less as compared to the first portfolio. So better allocation हुआ था इसमें sectoral wise, and individual stocks जो थे इसमें as compared to the first portfolio were much better. So what was the result? Obviously, it was down only 16%, and it completely outperformed the broader index because the sectoral allocation was good, the pedigree of stocks were good, the quality of stocks were good. So the key takeaways are, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो. आपके पास सिर्फ पैसा होगा, उससे आप ज्यादा पैसा बनाओगे, ऐसी इट इज नॉट, आई मीन ऐसा जरूरी नहीं है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, so from that perspective, you have to have a good diversified portfolio and a good multi-cap portfolio rather than having a very small or a mid or a large cap portfolio. So then the question arises कि boss मैं ये portfolio बनाऊं कैसे? Okay. So now there are two options. या तो फिर you are expert enough to build your own portfolio because you have the past experience, you have the knowledge of equity markets, you have the knowledge of fundamentals which are used in the equity markets in identifying good quality stocks, in identifying the pedigree of the management, in understanding the ratio analysis, in understanding the fundamental analysis. Yes, अगर ये सब knowledge आपके पास है एंड एक्सपीरियंस भी है, तो आप खुद से आप बना सकते हो एंड अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो. बट आज के तारीख में अगर आप देखा जाए तो 70 to 80% of the population who are investing into equity markets, they really don't have the knowledge in terms of how to build a portfolio. So then in that case, आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? आपके पास पैसा है, बट कहाँ पर निवेश करूँ, कौन से स्टॉक्स खरीदूं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. So at that point in time, you have to approach a fund manager like Motilal Oswal, जहाँ पे एक solid research team है, जहाँ पे हम काम करते हैं, and we directly talk to the management of all these companies. We come across so many people who are directly associated with the companies, and we get to understand the fundamentals of the company. तो हमें ये बहुत आसान हो जाता है कि हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, rather than using your brains and going wrong in your investments. It is always better to approach the fund manager or a particular broker, जहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं, जिन्हें एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, and they will take care of your hard-earned money. So that is a humble request to all of you who are listening to this particular webinar. Please, if you have good amount of money, but if you don't have the knowledge as far as equity markets is concerned, approach a good investment advisor so that he can take care of your money over a period of time in a much better way.
सो एक मॉडल पोर्टफोलियो का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर. इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो जैसे मल्टी कैप पोर्टफोलियो हम बोलते हैं, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों मुझे इन्वॉल्व करना है. तो हाउ हाउ कैन वी बिल्ड दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 16 स्टॉक्स हैं across various sectors like banking, cement, consumer durable, FMCG, IT, metals, NBFCs, oil and gas, pharma, telecom. और इसके अलावा एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन के अलावा मुझे एक मल्टी कैप डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए. तो मुझे लार्ज कैप स्टॉक्स भी चाहिए, मिड कैप स्टॉक्स भी चाहिए एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स भी चाहिए. तो अगर आप देखोगे तीन टेबल्स हैं. एक जहाँ पे मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, सेक्टर्स डाला है, परसेंटेज एलोकेशन डाला है. एंड टिपिकली ये मैंने एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाया है जहाँ पे 80% ऑफ द एलोकेशन इज इनटू लार्ज कैप, 15% इज इनटू मिड कैप एंड 5% इज इनटू स्मॉल कैप. एंड टू एड टू इट, एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हो तो आपका एफएमसीजी में आप 15 to 20% रख सकते हो, आईटी में 15% रख सकते हो, फार्मा में 10 to 12 to 15% रख सकते हो. सो दैट ये जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें एलोकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो होगा वो थोड़ा सेफ होगा व्हेन एवर देयर आर डाउनसाइड्स इन द मार्केट. तो ये कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की तरीके से एक्ट करेगा. तो यहाँ पे जो हाई बीटा सेक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स हो गए या फिर सीमेंट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, बैंकिंग एंड एनबीएफसी हो गया, तो उसमें एलोकेशन हम थोड़ा कम करते हैं. सो दैट कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो इन्वेस्टर है वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो उस हिसाब से हम सेक्टोरल एलोकेशन करते हैं. अब मान लो कि कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव है, तो मुझे 80 आई एम ओके विथ हैविंग लार्जर पोर्शन इनटू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स व्हिच आर एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क. तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से 60-70% हम मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे एंड 30 to 40% वी विल इन्वेस्ट इनटू लार्ज कैप स्पेस. सो ऑब्वियसली हम एफएमसीजी, आईटी, फार्मा में एलोकेशन कम कर देंगे एंड एट द सेम टाइम जो हाई बीटा सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है एंड मूवमेंट ज्यादा होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, हम वो सारे सेक्टर्स में ज्यादा निवेश करेंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन the investor risk profile and then the fund manager will take a conscious approach कि बस ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए मुझे ऐसा वाला पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और जो कंजर्वेटिव है उसके लिए अलग टाइप का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस when the client's money come into a fund manager's kitty. He will take proper care of all these things and then eventually build a portfolio. सो एट द एंड ऑफ इट आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने आपका पैसा डाल दिया 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, बट रेगुलर मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर 1 महीने में या तो फिर हर एक क्वार्टर में आपको एक बार आपका जो हम कहते हैं चिट्ठा खोल के देख लेना चाहिए. आज मैंने 3 महीने पहले मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, तो आज के तारीख में 1 करोड़ की वैल्यू कितनी है. कहीं वो 95 लाख तो नहीं हो गई, कहीं कहीं वो 1 लाख 1 करोड़ 10 lakhs हो गई है या 1 करोड़ 20 lakhs हो गई है. इट्स ओनली बिकॉज इट विल गिव यू अ गुड स्लीप एट नाइट एंड इट विल कीप योर आईज ओपन दैट जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो सही जगह पे इन्वेस्ट किया है या नहीं. अगर सही जगह पे नहीं किया है, 1 करोड़ की वैल्यू आज 90 lakhs हो गई है, सो देन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन माय पोर्टफोलियो, क्या गलत जा रहा है. तो यू कैन टेक द करेक्टिव एक्शन एट दैट पॉइंट इन टाइम. 3 महीनों के बाद भी अगर आपका पैसा डूब रहा है, मतलब नोशनल लॉस हो रहा है, तो प्रॉबेबली यू नो बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी, जाहिर सी बात है कि कभी कभी पोर्टफोलियोज नीचे आ जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर हर बार कुछ ना कुछ चेंज करना है, बट एटलीस्ट आप एक बार देख लोगे कि जो मैंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सही है या नहीं है. कई क्वार्टरली नंबर्स खराब आए हैं तो मैं कुछ करेक्टिव एक्शन लेना मुझे चाहिए. अगर एक क्वार्टर का नंबर्स खराब है बट मुझे पता है कि इसकी स्टोरी बहुत इंटैक्ट है फॉर नेक्स्ट 3 quarters और मे बी फॉर नेक्स्ट 1 year और मे बी फॉर नेक्स्ट 5 years, देन आई विल स्टे काम, पेशेंस रखूंगा और मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूंगा. बट कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू periodically go through your portfolios and just see whether there are any laggards in the portfolio, whether there are any minus points in the portfolio, then you can take the corrective action. That is the main thing which I am trying to tell you. So eventually, at the end of my presentation, I would say that equity investment जो है, it is a combination of art as well as science.
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. It is not only art, it is not only science, but it is pure combination of art and science. So this is where my presentation comes to an end. Guys, we at Motilal Oswal have a very solid research team, and we have a solid training team as well. So if you can look at this particular slide, we have EDUMO PRO, which is the training team which we have at Motilal Oswal. We invest a lot of money as far as research and training is concerned. We want our investors to be absolutely um, uh, full of knowledge in terms of where they are investing their money, in terms of what they are investing into. So we offer a lot of courses as far as the stock markets are concerned, right from trading to investments. There are advanced courses on stock markets. There are advanced courses as far as the options and derivative strategies are concerned. So we have in-house trainers for all these things. We have advanced courses on technical analysis also, which are taken by trainers like Manish Shah. Option strategies are taken by Smita Parekh. So a lot of things are offered at Motilal Oswal platform. We are available on social media also. A lot of our research is available. In case you want to get into touch with us, if you have any doubts regarding these courses, regarding our research, please feel free. You can give a missed call on this particular number which is there in front of you, and our experts from the company would get in touch with you, and we will help you out in every possible way. So more or less, that's all from my side. I have tried to cover as many things as possible as far as building a good portfolio is concerned, as far as the asset allocation is concerned, as far as the risk appetite of a particular investor is concerned, as far as the diversification is concerned, as far as large, mid, small cap, multi-cap portfolios are concerned. Most of the things I've tried to cover in my presentation. And as I told you, I have taken roughly 35-40 minutes for this presentation. I'm with this, I am closing my remarks, and I'll be happy to answer whatever questions you have. Uh, I will be definitely happy to answer them. So there are a couple of questions already which I can see here. There are people who have really appreciated about this presentation. They are saying very nice presentation. Thank you so much. It was a very knowledgeable presentation. Thank you. Thank you. Really appreciate your time, people. There are a couple of questions that what are the cost of these courses. So we will definitely get in touch with you. Probably, you can give a missed call on this particular number, and the concerned team will definitely get in touch with you in terms of which course you are looking out for, in terms of what exactly you want as far as training is concerned, and what are the courses, what is the time frame for that for those courses, and we will answer to all those questions. Okay. I will be taking the questions now. So guys, there are a couple of questions which are pertaining to individual stocks. So I'm afraid this particular presentation, rather this particular session is not for getting into the individual stocks. So I would, keep away all those questions. But before getting into that, I'll just give you the gist of the overall market right now. Obviously, we are all aware that the markets have corrected almost 13 to 14% from their all-time highs of 18,600 on Nifty. So for all those investors who typically look for the investments into equity from a longer-term perspective, it is a very good opportunity to get into these stocks, because though Nifty and Sensex have corrected by 13-14%, there are so many good quality large cap names, blue chips, which have corrected by 25 to 40% in this particular fall in last 2 to 3 months. So obviously, a couple of months back, the valuations were on the higher side. बहुत सारे stocks अपने fundamentals के बहुत आगे trade कर रहे थे. So the market have seen this particular correction in these stocks, and the stocks are now available at reasonable levels. So definitely one can take this opportunity and build good portfolios over a longer term period.
Also, I would like to say that the corporate earnings जो हम देख रहे हैं लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में, they have really revived. लास्ट डेकेड में हम लोग ने देखा था, लास्ट 5 से 6 साल में there was no corporate earnings coming in. So as far as the companies were concerned, even the large cap companies, keeping aside 15 to 20 companies, most of the companies were struggling. But since last 2 to 3 quarters, we have seen some kind of revival happening. We are seeing some kind of EPS growth coming in for good quality companies. So we feel that this particular trend will continue for next 2 to 5 years. So अगर ये कॉर्पोरेट अर्निंग रिवाइवल अच्छा खासा जो शुरू हुआ है, ये नेक्स्ट 2 से 5 साल के लिए लगातार कंटिन्यू होता है, तो हम 2003 से लेके जो 2008 का बुल रन था, जहां पे markets had gone up by almost 450 to 500% on absolute terms, again that kind of a period can come in. So Nifty can double from here in next 3 to 5 years time frame, अगर corporate earnings consistently आती है तो. So we would request all the listeners at this point in time to invest in good quality blue chips. There are so many stocks which are doing phenomenally well. So many companies from the mid and small cap segments also which are doing very well. जहाँ पे growth prospect बहुत अच्छा है, management pedigree अच्छा है. There are few themes which are very very lively at this point in time. जैसे electric vehicles का एक theme हो गया, renewables का एक theme हो गया, API मैन्युफैक्चरिंग का एक थीम हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स का एक थीम हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर से इट इज अ वेरी गुड थीम जो बहुत अच्छा करेगी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. So all in all, you have to select good quality companies from each and every sector and build a good diversified portfolio, which I have already spoken during the course of my presentation. So एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर व्यू ऑन SIP एंड यूलिप्स? सो डेफिनेटली मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि SIP करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन एंटर इनटू द मार्केट्स एट ईच एंड एवरी लेवल. अब जैसे आपने 2 महीने पहले अगर 18,000 18,500 के इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्ट किया है और आप डर के बैठ जाओगे और आज 16,000 के लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, then you will have to wait for a longer period of time for your investments to give fruitful returns. At the same time, if you are doing an SIP and if you are taking the advantage of this volatility, आपने 18,500 पे भी इन्वेस्ट किया, आप 17.5 पे भी इन्वेस्ट करोगे, आप 16.5 पे भी करोगे, तो आपका एवरेज बहुत अच्छा खासा नीचे आ जाएगा. एंड देन जो आपका टारगेट जो है इन्वेस्टमेंट्स का, जो रिटर्न्स का जो टारगेट है, वो जल्दी अचीव कर पाओगे. So obviously SIP is the best tool to invest into the market at each and every level and over a period of time. So definitely you can go ahead with that. What is your opinion on small cases? Yes, that is a very interesting question. Again, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है निवेश करने के लिए, but at the same time they have some funds and they really want to invest into the equity markets, then they can get into the small cases. Small cases are nothing but क्या होता है कि एक बास्केट टिपिकली जनरेट करते हैं फंड मैनेजर्स. जैसे मोतीलाल ओसवाल में भी हम बास्केट आइडियाज काफी सारे जनरेट करते हैं. So depending upon the flavor of the market, depending upon the flavor of which sector is going to perform for next 6 months or maybe for next 1 year, we come out with these basket ideas. Okay, जहाँ पे एक बास्केट में करीबन 4 से लेके 8 से लेके 12 स्टॉक्स होते हैं. So let's say for example if you want to invest 20,000 rupees, आप वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है जो ऑलरेडी फंड मैनेजर डिसाइड कर लेता है. हर एक स्टॉक के लिए एक परसेंटेज एलोकेशन डिसाइड हुआ होता है. सो यू इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर proportion into these either 4, 8 or 12 names, whatever amount of stocks are there in that particular basket, and then you just hold on to that basket for your target returns. So either that basket is made for 3 months time frame or maybe for 6 months time frame or maybe for 1 year time frame. So last 1-1.5 साल में मोतीलाल ओसवाल में हमने करीबन 40 से 50 ऐसे अलग अलग टाइप की बास्केट्स जनरेट की थी. So there are a couple of baskets which have given returns of 100% in
less than 8 to 9 months also. Something like IT basket, then we had come out with sustainable energy basket, जहाँ पे renewables and electric vehicles की थीम हमने कंबाइन करके एक बास्केट जनरेट की थी. That basket had gone up by 80%. We had come out with a Tata consumption basket which had given 80 to 100% in 1 year's time frame. So इन्वेस्टर्स टिपिकली जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मैं ये वाला स्टॉक खरीदूं या ये वाला स्टॉक खरीदूं, बहुत सारे मार्केट में टिप्स देने वाले लोग होते हैं कि भाई ये तू ये खरीद ले, ये तो बढ़ जाएगा. बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है. You cannot try your luck every time. So that is the reason we are talking about approaching a particular broker or a fund manager like us, so that we can give you proper guidance in terms of आपको क्या बाय करना है. अगर आपके पास छोटे फंड हैं तो आप उस रेशियो में बाय करिए, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा कॉर्पस है तो आप उस रेशियो में बाय करिए. सो दैट इज वेयर द एक्सपर्टीज विल कम इनटू प्ले. सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ विल यू जनरेट रेगुलर इनकम हियर. सो रेगुलर इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपने टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, बट एट द सेम टाइम जैसे आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़े पोर्शन को आप शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए भी स्प्लिट कर सकते हो. जैसे आप, आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर, आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से आप करीबन 7 लाख लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, बट जो 3 lakhs है वो आप उसको शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए. सो दैट क्या होगा कि आप लेट्स से आपने कुछ खरीदा, 3 लाख में से आपने 4-5 स्टॉक्स खरीदे फ्रॉम अ शॉर्टर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. तो आजकल मार्केट्स इतने फ्लैम्बॉयंट हैं, इतना यूफोरिया है कि कोई कोई स्टॉक्स में आपको 3 या 4 दिन में ही 10% रिटर्न मिल जाता है, कोई कोई स्टॉक्स में आपको 2 या 3 महीने में 15 से 20-25% का रिटर्न मिल जाता है. तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म आपका एक पोर्टफोलियो साइड बाय साइड ग्रो हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो आपको रेगुलर इंटरवल में आपको पैसे की जरूरत है, तो आप वो 3 lakhs में से आप जो प्रॉफिट बनता है वो आप बाहर निकाल सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन जनरेट रेगुलर इनकम. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पूछ रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन ETF एंड कैन यू कंपेयर विथ म्यूचुअल फंड्स एज द रिटर्न्स. सो सी बेसिकली क्या होता है कि ETF जो है, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये एक नया कंसेप्ट है इंडिया में. दो व्हेन आई से नया, इट इज ऑलरेडी देयर फॉर लास्ट 10 to 12 years, बट यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोगों में. ETF क्या है, व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू ETF, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETFs. एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है इंडिया में, इट इज रीजनेबली नोन नाउ टू द पीपल, बट अगेन इट डिपेंड्स आपका टाइम हॉराइजन क्या है, आपको आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए. आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो. मोटा मोटी आपका रिटर्न्स सिमिलर होगा अगर वो पर्टिकुलर ETF एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर थीम को रेप्लिकेट कर रहा है. जैसे निफ्टी है, 50 स्टॉक्स का जो कंपोजिट इंडेक्स है, सिमिलरली एक निफ्टी ETF होता है, दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी 20, जो एग्जैक्टली निफ्टी का रेप्लिका है. तो अगर आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और अगर आप निफ्टी ETF खरीद के बैठ जाते हो, तो उस दोनों का रिटर्न्स मोटा मोटी सेम ही होगा. सो अगेन इट डिपेंड्स, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है. जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो, कहीं कभी कभी उसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, या मे बी 1 साल का, 2 साल का. बट अगर आप ETF खरीदते हो तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इट इज अवेलेबल ऑन, इट इज देयर इन योर डीमैट अकाउंट. आपने आज खरीदा, 3 महीनों में आपको अगर 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको बेशक बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हो. So there are advantages of both the things. So you can take that decision again, consulting your advisors. एक क्वेश्चन है कि कितने पैसों से हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. What should be the starting amount? So again, it depends upon the individual. It depends upon आपका गोल क्या है, आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है,
सो अगेन वेरी वन इम्पॉर्टेंट रूल, थंब रूल इन इन्वेस्टमेंट इज, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं महीने के या फिर सालाना, सबसे पहले आपको एक प्लान बना देना चाहिए कि इतना पैसा मेरे को साइड पे रखना है, बिकॉज ये मेरे मेडिसिन में जाएंगे, ये मेरे बच्चे के एजुकेशन में जाएंगे, ये मेरे घर के खर्च में जाएंगे, और वॉट एवर इट इज। उसके बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है वो आप इक्विटी में डाल सकते हो, जो आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए जरूरत नहीं है। टिपिकली वो पैसा आप इक्विटी में डालोगे तो क्या होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स को कुछ हिंड्रेंस नहीं आएगा, मतलब दे विल नॉट बी अफेक्टेड। ऑब्वियसली इमरजेंसी हो गई एंड आपको अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना पड़े, ऑब्वियसली नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बट पहले आप अपने एक्सपेंसेस का प्लान आउट कर लीजिए एंड देन जो भी आपके पास पैसा बचता है वो आप इक्विटी में डालिए, सो दैट इट इज टेकन केयर ऑफ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल एसेट एलोकेशन। सो अगेन, जैसे मैंने बताया कि इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपिटाइट। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट विल वेरी फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। एक क्वेश्चन है कि पीएमएस और एआईएफ के क्या टिकट साइज होते हैं एंड चार्जेस कितने होते हैं। सो अगेन, पीएमएस का जो सेबी मैंडेट है उस हिसाब से 50 lakhs का मिनिमम टिकट साइज है, एंड एआईएफ का, दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का टिकट साइज है 1 CR एज पर द सेबी मैंडेट। बट एनुअल चार्जेस जो होते हैं वो डिफर करते हैं फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर। मोतीलाल ओसवाल कुछ चार्ज करेगा, आनंद राठी कुछ चार्ज करेगा, इडलवाइज कुछ चार्ज करेगा। सो इट वेरीज फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर, and it also varies from the size of the portfolio. बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली ये राइट सेशन नहीं है टू आंसर देम, सो आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट। काफी जन ने अप्रिशिएट किया है, वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज सेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, इट हैज ओपन आवर आईज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। किसी का क्वेश्चन है एडवांस कोर्स ऑन ऑप्शन स्ट्रेटजीज फीस। तो ऑनेस्टली गाइज, आई एम फ्रॉम द रिसर्च साइड, ट्रेनिंग का जो हमारा टीम है, दे वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दैट। So I would request you to give a missed call on this particular number, which is there in front of you, and they will get in touch with you definitely. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। Should we keep two separate demat accounts? What percentage of portfolio should be trading and long term investment? So again, that is a very good idea. You can probably have two different demat accounts. एक आप proper long term के लिए रख सकते हो और एक proper trading के लिए रख सकते हो, so that your investments don't go haywire and you are absolutely clear on your goals. जो short term के लिए आप कर रहे हो वो एक particular demat में आप उसको टैकल कर रहे हो, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें आप शॉर्ट टर्म का कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हो। What percentage of portfolio should be in trading and long term investment? Again, this is a very interesting question, but again that will vary from individual to individual. अब it depends, आपको आपका जो गोल है, आपने जो गोल सेटिंग किया है, वो आपका जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है या शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा है, आप रिस्की बेट्स लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यू कैन डिसाइड हाउ मच पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो यू वांट टू keep in trading, how much risk you want to have associated with your trading portfolio, and from a long term portfolio आपको कितना करना है। So एक concrete answer इसका कभी भी नहीं होगा, it will vary from individual to individual. किसी ने पूछा है कि विच आर द ब्लू चिप्स विच वन कैन बाय। सो ऑब्वियसली ब्लू चिप्स बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, दो दिस इज नॉट द राइट सेशन, बट आई वुड गिव फ्यू नेम्स। बहुत सारे स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, पीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक,
Sun Pharma, Divi's Labs. These are all the blue chip names which have corrected significantly in this market. One can definitely accumulate them in 2 to 3 tranches. किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि समटाइम्स द एंट्री टाइम इज रॉन्ग, वी परचेज स्टॉक एट हायर प्राइस एंड देन फर्दर इट इज डीवैल्यूड and go sideways in the portfolio. Such stocks are good fundamentally, but they pull down the portfolio. What should be done in that case? So definitely it is a very interesting question. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऊपर के भाव में आप चढ़ जाते हो एंड करीबन कभी कभी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल लग जाता है वो भाव आने के लिए. तो यहाँ पे आपको एक कॉन्क्रीट व्यू लेना पड़ेगा. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रोथ इश्यू है, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे. आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल सिनेरियो है या फिर जो डोमेस्टिक सिनेरियो है वो पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट है. तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में 1, 2, 3 क्वार्टर के लिए कंपनी अंडर परफॉर्म करेगा. बट अगर आपको अगर आप श्योर हो कि फ्रॉम अ 5 year perspective this company can be a multi bagger, so then in that case you don't have to keep changing your portfolio stocks, and only from a shorter term perspective आपके mindset को आप इतना भी short मत कर लीजिए कि long term में अगर आप वही particular stock से benefit आपको होने वाला है and अगर आप उसमें से निकल गए, so obviously that is not a good investment sign. So definitely you'll have to keep some patience, but obviously you have to keep all these things in mind, whether are there any management changes happening, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो गया है या फिर कोई मैनेजमेंट में से निकल करके जा रहा है कंपनी को छोड़ के, या फिर उसके नंबर्स बहुत ही खराब हैं, तो फिर यस यू कैन टेक अ कॉन्क्रीट कॉल. भले भी फिर वो 15 से 20% आपके बाइंग से नीचे है तो भी आप उसको एग्जिट करके निकल जाओ. There is one interesting question: when and how to average a portfolio in the current market situation. So friends, अभी अगर आप देखोगे कि मार्केट ऑलमोस्ट 13 to 14% ऊपर से करेक्ट हो चुका है एंड देयर आर मेनी इंडिविजुअल स्टॉक्स व्हिच आर करेक्टेड बाय 20 to 50%. जैसे जो नए आईपीओज आए हैं या फिर जो डिजिटल थीम, ई कॉमर्स थीम के जो स्टॉक्स है, दे हैव करेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ऑल्सो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना कि आप कौन से स्टॉक को एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज अभी देर आर फ्यू स्टॉक्स विच आर करेक्टेड बाय 50-60%, एंड यू नेवर नो. अगर कोई ई कॉमर्स स्टॉक है जहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कर रही है, एंड अगर आप उसको लेते जाओगे, एवरेज करते जाओगे, बट वो कंटिन्यूअस नीचे स्लाइड होते जाएगा और उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, देन ऑब्वियसली यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस इवन इफ यू आर एवरेजिंग इट आउट. तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एंड whether it will make sense to average out that particular company. So from a investment point of view, you have to take very concrete calls in terms of कौन से स्टॉक्स में मैं एवरेज करूँ. तो उस वजह से आपको क्वार्टरली नंबर्स देखने पड़ेंगे, मंथली सेल्स नंबर्स देखने पड़ेंगे. अगर सेल्स नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर हो गया एंड स्टॉक हैज कम डाउन बाय लेट्स से 15%, बट अगर एक पर्टिकुलर क्वार्टर के नंबर उसके फैंटास्टिक है, प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर फैंटास्टिक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको ये पर्टिकुलर जो फॉल आया है स्टॉक में यूटिलाइज करना है एंड यू हैव टू अग्रेसिवली बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी. करिए आप एवरेज. तो क्या है कि जब भी ये मार्केट जोर से ऊपर आएगा तो आपका ये पर्टिकुलर स्टॉक का भाव बहुत जल्दी से ऊपर आएगा, बिकॉज उसमें इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर in all these stocks rather than investing into those stocks which are not making profits, those companies which are not making profits but which are going down and down. So I think बहुत सारे questions are getting repeated. एक क्वेश्चन है कि we have to concentrate on technicals and fundamentals for investment. So yes, definitely we call it as techno funda. So
fundamentally, if you have selected good set of stocks, and if you are capable enough of putting the technical strength to that learning, then obviously you can make good money, because fundamentally अगर stocks अच्छे हैं but technically अगर आप खराब लेवल पे एंटर कर लेते हो, हायर लेवल पे एंटर कर लेते हो, तो अगर आपको टेक्निकल फंडा का नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, एंड इफ यू कैन अवॉइड एंटरिंग इनटू हायर लेवल्स, then it will definitely help you to fetch faster returns over a period of time. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेशन के पर्टेनिंग नहीं है, so I am definitely avoiding those questions. They are more related to individual stocks, so I'm sorry, this is not the correct platform to answer those questions at this point in time. Apart from that, I think I have answered most of the questions which are getting repeated. ETF point of view, PMS, mutual funds, asset allocation, major sectors. What are the major sectors which should be looked into for long-term investment? So as we had seen in the slide also, there are major sectors like FMCG, consumer durable, your IT, retail, banking, NBFCs, insurance, defense, PSUs segment is one of the segment which is there. Sugar hai, real estate hai, construction hai, infra hai, capital goods hai. So all these sectors are there, from which you can select the top leaders, top companies from each and every sector and build a good investment portfolio. Then there is one question, what is the good time to buy ETF? So see, ETF is nothing but an exchange traded fund. It is the replica of various indices. जैसे बैंकिंग का ETF होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ETF होता है, निफ्टी का ETF होता है. तो whenever the markets are down 10, 15, 20%, all these ETFs also come down exactly in line with the markets. So that is a good time to enter into these ETFs. किसी ने क्वेश्चन पूछा कि whether these baskets are free to investors. Yes, absolutely. I mean, you just need a demat account, and these baskets, we don't charge any additional fees in terms of revenue. Only your brokerage, whatever you are paying, that is charged to you. It is just that it is a combination of 5 to 10 different types of stocks which the fund manager or which the research people at Motilal Oswal feel that they will do good. So we combine those stocks in the form of a basket, and you can buy in your portfolio, and only brokerage is charged. There are no additional fees associated like PMS or AIF. So I can see most of the questions getting repeated. There is one interesting question. Probably we'll take another 2-3 questions and we'll wind up. What kind of investment is better, active or passive? So again, see, it depends upon your goals. If you are a passive investor in terms of let's say if you're a conservative investor, if you don't have too many needs, then obviously you can go in for a passive investment. जहाँ पे typically you can go in for ETF investment, which is the best kind of a passive investment, जहाँ पे आपने एक particular index को replicate कर लिया and you are holding it for a longer period of time. But at the same time, if your goals are different, if you want to take aggressive bets, if you want to take more risk, then obviously you have to take the active part of investment, maybe through mutual fund or maybe through a PMS route or maybe through a direct equity, जहाँ पे you are actively involved in taking the decision of entering or exiting a particular stock,
and making quick money. So that's how you can, take a better perspective. Lot of appreciation from you people. Great presentation. Really appreciate your positive feedback, guys. How do you invest lump sum or SIP? So I've already answered this question. It depends upon your risk appetite, your profile, whether you have lump sum money, whether you want to have investments in bits and pieces. Uh, Asset allocation, we have already spoken about. What is the ratio? We have already spoken about. How do you stagger investments over a period of time? So yes, in bad markets, definitely you have to get a sense of how the markets will react. What can be the percentage fall of the markets from the peak? It can be either 10, 15, 20%. Uh, it depends upon the news flows. It depends upon global events. It depends upon the domestic events, how things pan out, how things shape up. It depends upon how corrections are happening in individual stocks. So you have to phase out your investments over a period of time, depending upon how severe the fall is in the market or in individual stocks. Uh, can you give us some multi-baggers? So honestly, friends, you will never get a multi-bagger beforehand. A multi-bagger will always become a multi-bagger over a period of time. तो आज अगर जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया, तो मुझे ये 5 साल या 10 साल के बाद ही पता चलेगा कि ये मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट था या नहीं. इट कैन बिकम अ जीरो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. सो आज की तारीख में किसी को भी पता नहीं होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैं पर्टिकुलर स्टॉक में कर रहा हूँ ये मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है. So yes, I have answered most of the questions. Uh, thank you so much, guys, Yeah, for being patient enough. that was a great session, Taking out your Nirav time ji. on a Saturday evening. Once again, thank you everyone, and looking forward to many such presentations in future from our company pertaining to various other topics. That's all from my side. Thank you and have a great evening. Thank you so much. Yeah. That was a great session, Nirav ji. I hope everybody liked that session. Especially, I like that session very much. So whenever he teaches it with great dedication and great patience. That is one thing that I like. So in the session, I have noticed that many people are much more into learning. They want to learn new things. So it has already been communicated by Mr. Nirav ji that Motilal Oswal has come up with a new subscription-based courses such as advanced course on stock market trading and investing, advanced course on option strategies, advanced course on technical analysis. So if anybody wants to learn more and they want a subscription based courses, they can just give us a missed call on 022 41 680 827. Now, before directly going into this, I have shared one message in the chat box. I hope everybody has received it. Just let me know yes or no. So in that message, I have shared a particular link. So if you want to know more about EDUMO Pro, you can just visit that link. It's a small YouTube video which will show you an introduction of EDUMO Pro. So this session is also live on YouTube. So those who are watching from YouTube, you can see the video in the description. Video link is given in the description section. Those who are watching it from Zoom, they can check the chat box. I have sent a message in which there is a video link. So before going into EDUMO Pro, you can just check this out. You can check the video. There is a small introduction video about the entire product of EDUMO Pro. EDUMO Pro is basically a knowledge-based platform of Motilal Oswal. So in order to have more information, you can give us a missed call on the number which is shown in the screen, or the contact details will be given in the video as well. Okay. So that was a great session. Nirav ji, thank you very much. Thank you all for taking out your time and attending this session on Saturday. Thank you and have a nice time.